कोविड भी हो तो बुखार, अगर कोविड भी हो लेकिन अगर बुखार कंट्रोल में रहता है तो कोई इश्यू नहीं। चलो इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। सो अभी तक आ गए 19 पार्टिसिपेंट्स हमारे, तो हम शुरू करते हैं। हाँ, अगर तुम जो हमने पढ़ा पिछले दिनों उसमें से किसी में कुछ प्रॉब्लम, कहीं पे कोई दिक्कत? अभी 3 और है वेटिंग रूम में, ये कौन है? ओके, सो आई गॉट 23 इन द क्लास। सो कहाँ गए हम? ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, सो लेट मी कंटिन्यू। तो हमने कुछ हान बनाख थ्योरम और फिर उसके बाद उससे कुछ रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस की, और आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक। उसके बाद हम जाएंगे कुछ डिफिकल्ट थ्योरम्स की तरफ लास्ट पे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा सिंपल करते हैं। चलो ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। So suppose X is a normal linear space. Let X be a normal linear space, and we define a subset, we define annihilator of the subset. So X is a linear normal linear space. Now given, if I take a subset A in X and B in X star, where X star is the dual of X, we define a perp annihilator of A is a subset of X star, and it's X star belonging to X star, ऐसे सभी functionals जो kill करते हैं A को, यानी X star of X is equal to 0 for all X belonging to A, ऐसे सभी को अगर हम जमा करेंगे तो उसको हम कहते हैं A perp और annihilator of A। लेकिन फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं B, हालांकि मतलब एक ही है, मतलब ये जो perp का सिंबल है ये पहले लगाते हैं। So this is a subset of X such that X star at X is equal to 0 for all X star belonging to B. Okay, so these are vectors in X that are annihilated by every vector of B, and these are functionals that annihilate every vector of A. So a sort of duality. Now A perp is called annihilator of A, कुछ खास नहीं, and perp B is called annihilator of B. इसको खत्म कर देता है, इसीलिए annihilator। वैसे अच्छा होता अगर टर्मिनेटर कहते, जो मूवी का नाम है। ओके, एनहाइलेटर, वैसे एनहाइलेटर भी मूवी का नाम हो सकता है, उसमें होगा फिर कौन, वही होगा अपना श्वार्ज़नेगर और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। एनीवेज, सो इससे रिलेटेड हम थ्योरम करेंगे। तो बेसिकली वी कैन थिंक ऑफ B perp as a subset of X double star, because we know that, you know, in this way this defines a functional on X star also. So but for the time being we can also keep it like this, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं, because X can be, X is isometrically isomorphic to JX under canonical mapping, which is a subspace of X double star. Okay, theorem. Now for all A subsets of X and B subsets of X star,
पहला part, let me write it like this. Both are closed subspaces. B perp, नहीं मैंने गलत लिख दिया, जो मैंने ऊपर notation नहीं की. A perp and perp B are closed subspaces of their normal linear subspaces. Are closed subspaces. Second, A perp A का मतलब इसका अगर डबल perp लेंगे है ना, you think that now A perp is a subset of X star, so then I can take its double perp. Double perp nahi, perp in this sense. So this would be inside X. So ये जो है, it is equal to span of A. That's interesting. का closure. This second is interesting, and third जो है इसका, that's a consequence of second. That is A perp का perp is equal to A closure if A is a subspace of X. तो अब हम एक एक करके करेंगे, although it's easy to prove, ऐसा कुछ है नहीं. Now look at this. P perp किसके बराबर है? Rather perp B. This is equal to, I can say, what is B perp? It is all X star. यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ. It means that all X star belonging to B, and we take their kernel. ठीक है? ये कर्नल का मतलब है ना, जो जिनको ये वैनिश करता है. हम ले रहे हैं सारे x जिनको x स्टार, तो इट इज इसेंशियली कर्नल ऑफ x स्टार. इतना डेफिनेशन अगर मैं यूज करूं तो इसका मतलब है कर्नल ऑफ x स्टार. अगर मैं साथ में ये करूं तो इट मींस मतलब वी आर टेकिंग ऑल कर्नल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इनसाइड B. ठीक है ना? ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ओनली दिस मच मीन्स कर्नल ऑफ एक्स स्टार, और साथ में ये तो इंटरसेक्शन, बिकॉज इट मस्ट बिलोंग टू ऑल, तो इंटरसेक्शन आना चाहिए. now since x star is continuous, kernel of x star is a closed subset of X, and kernel of X star is also a subspace of X. Kernel is always a subspace of the domain. So हमें क्या मिला? हमें मिला हर कोई ये जो kernel of X star है, it's a closed subspace. And since arbitrary intersection by topology of closed sets is closed, and also an arbitrary intersection of subspaces is a subspace, so I essentially have an arbitrary intersection of closed subspaces. So that means, therefore, perp P is a closed subspace of X. था ना easy? Subspace of X. एक हिस्सा हो गया. अब दूसरा, अब consider, now let X star, Y star belong to A perp. अब A perp को पकड़ते हैं. Now it implies that X star at X is equal to 0 and Y star at X is equal to 0 for all X belongs to A. Okay, which implies that X star plus Y star applied to X using the pointwise operations inside our vector space, that's also equal to 0, which implies that for all X belonging to A, which implies that X star plus Y star belongs to A perp, and similarly, लेकिन तुम ये करोगे
alpha into x star belongs to A perp for all x for alpha belonging to K and x star belonging to X. No, x star belonging to A perp, sorry. तो इसका मतलब ये सब स्पेस है, therefore लेकिन मुझे क्लोज स्पेस दिखाना है. A alpha is a subspace. Of course, it's a subspace of X star. Now we have to show that it's closed. So close के लिए हम क्या करेंगे? Let X star belong to a closure. A perp का closure हम दिखाएंगे. Close दिखाने के लिए काफी है कि a set is equal to its closure. तो हम दिखाएंगे ये जो X star है ये belong करता है A perp में, तो फिर हमारा काम हो जाएगा. And since we are living in a metric space, it implies that there exists xn star contained inside A perp such that xn star converges to X star as n approaches infinity, and we know that modulus of xn star at x minus x star at x, अगर इसको कन्वर्ज करता है, is less than equal to using norm की property xn star minus x star into norm of x. This converges to 0 for all x belonging to x, which would imply that then x star at x is equal to limit n approaches infinity xn star at x, now which is 0 for all x belonging to A, so which implies that x belongs to annihilator of A, x star, sorry, and hence A star is equal to, which implies that A perp is a closed subspace of X star. तो पहला पार्ट हो गया फाइनली. सेकंड, तो सेकंड में बाय फर्स्ट कुछ चीज तो हमें पता ही है ना. एक मिनट. ओके, वी आर डन. तो मुझे क्या दिखाना है सेकंड में? मुझे दिखाना है ये A perp का होल perp is equal to span of A का closure. चलो ऐसे में करता हूँ. Okay, now if x belongs to A, it implies that x star of x is equal to 0 for all x star belonging to A perp is equal to P. That is, I have, मतलब चलो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया B. ऐसे देना नहीं चाहिए, B हमें किसी और को नाम दिया था, तो क्या नाम है? चलो क्योंकि ये टेम्पररी नाम है तो इसके लिए हम लेते हैं, लेट्स कॉल इट B. ओके, अगर ये V है, so it implies that x star at x is equal to 0 for all x star belonging to V, which by definition means x belongs to V perp, which is equal to A perp का perp. मैंने बोला टेम्पररी नाम. So A is a subset of A perp का perp, and since by part first this is a closed subspace है, तो it implies that span of A का जो closure है, it must be contained in A perp का perp. मुझे दिखाना है ये बराबर है इसके, you know, because it's a subspace, so it must contain the span of all the vectors that it contains, and since it is closed, so it must contain the closure of subset, closure of its subsets, because it contains closure of itself. Okay,
सो ये तो हो गया, लेकिन हमें दिखाना ये बराबर है ना. Now we have to show that what do we have to show? I have to show that a perp is exactly equal to span of a closure. Now assume to the contrary, तो हमें क्या मिलेगा? अगर ये बराबर नहीं है और इसका सबसेट है, तो then I would get span of a. Assume to the contrary, then span of a closure would be a proper subset of a perp. So therefore, and of course this is a closed subspace. Then by Hahn-Banach theorem, Hahn-Banach theorem क्या कहती है? Now this is now a closed subspace of a normal linear space. ये इसका proper subspace है, ठीक है ना? So नहीं, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर इसी से अच्छा होगा. So then there exists some x belonging to a perp such that x does not belong to span of a closure. Then by Hahn-Banach theorem. Therefore, then by Hahn-Banach, and hence by Hahn-Banach theorem there would exist a functional जो इस सब को मार देगा, इस सबस्पेस को, लेकिन x को नहीं मारेगा. There exists x star belonging to x star such that norm, all these properties of making norm of x star is equal to 1, and x star vanishes over this closed subspace, and x star at x is not equal to 0. Now in particular, x star of a is equal to 0, या इस तरह से x star at x is equal to 0 for all x belonging to a. That's because a set is contained in its linear span, right? इसका क्लोजर. तो अगर लेकिन इससे तो गड़बड़ हो गई. Now I have got x star at a is equal to 0. What does that mean? That means, मैंने गलत तो कुछ नहीं किया. हाँ, it clears everything. Star at x, थोड़ा सा गलती होगी. तो what, हाँ ठीक है. But it means that then x star is equal belongs to a perp. वही तो मतलब है a perp का, जिसके सारे के सारे a को खत्म कर दे. अब क्योंकि सारे के सारे a को खत्म कर देगा, what does that mean? What does that mean? लेकिन यहाँ एक आ जाएगी ना contradiction. So I have got this is not equal to 0 where x belongs to a perp. So it would imply that, देखो इसके साथ contradiction आएगी. क्यों? So ऐसे मैं लिखता हूँ, and x star at x is not equal to 0 for x belonging to, for all नहीं, for some x belonging to a perp. A contradiction. क्यों? क्योंकि अगर ये बिलोंग करता है x perp में, तो जो भी x स्टार में है, जो भी a perp में है, वो इसको किल करना चाहिए, है ना? And it should be killed by all the elements here. लेकिन ये तो इसको मार ही नहीं रहा है. So which is a contradiction. Therefore जो कि हमें चाहिए था, a perp का perp must be exactly equal to span of a closure. Third part is obvious. Now, if A is a subspace, ये तो तुम्हें पता ही है, A must be equal to its span, which means that a closure must be
equal to span of A closure, which we know is equal to A curve का verb, and we are done by second. Okay. So ये खत्म हो गया. Now let me come to one of the topics. उसके बाद हम थोड़ा बड़े topics को लेंगे. Okay. Now it's about the quotient space. Do you know this x by y? Yes or no? किस हो गए सब? Quotient space पता है ना? Anybody? No. Yes, sir. पता है. Very good. वो पता वो क्या होता है? It's set of all cosets, है ना? Yes, So sir. this is actually if x is a पहले मैं लिख देता X हूँ. belongs to X is a vector space, है ना? And y is a subspace. Then I can define these cosets. X plus y such that X is in X. बिल्कुल सही. So this is a collection of sets. That's why we call them cosets. Yes. So it's also a vector space. ये तो तुम्हें पता ही है ना? Yes, So sir. quotient space is a vector space और इसके जो operations होते हैं वो होते हैं x1 plus y plus x2 plus y. No, straightforward actually. X1 plus x1 plus x2 plus y. Very good. And x1 alpha SA plus y is equal to alpha times x1 plus y. X1 तो plus इसका y. वेक्टर एडिशन है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन. हाँ, हमने किया था फंक्शन एनालिसिस 1 में. इफ y is a closed subspace, सबस्पेस होने के साथ साथ अगर ये क्लोज्ड है, then x by y, मतलब of course y is a closed subspace of a normal linear space. x close का मतलब तभी होगा जब कोई टोपोलॉजी. तो अगर y है closed subspace of a normal linear space x, then x by y is also a normal linear space. In fact, वहाँ extra भी है. If x is complete, then so is x by y, quotient space. हाँ, तो ये x by y भी एक normal linear space बन सकती है अगर y closed है. तो फिर अगर ये normal linear space है तो हमें पता होना चाहिए कि norm कैसे defined है. और इसका जो norm है, norm of a coset, norm of x plus y, coset का norm हम define करते हैं to be infimum of the norms of x plus y such that y belongs to y. ठीक है? और कभी कभी हम इसको ऐसे भी शायद मैंने वहां लिखा हो, infimum और y belongs to y. यानी मैं सारे y के वैल्यूज इनपुट करता हूं, उनको x के साथ ऐड करता हूं, उनका नॉर्म लेता हूं, और उनमें जो सबसे छोटा वाला हो, सो ऑफ कोर्स उसको कोसेट नॉर्म कहते हैं. तो आई वुड लाइक यू टू रिवाइज दिस. मतलब ना ये कोसेट नॉर्म कैसे है, यहाँ पर भी थोड़ा रिवीजन हो ही जाएगा क्योंकि मैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द एनहाइलेटर. सो लेट्स सी. दीस आर नाइस लिटिल थ्योरम है. 2 पार्ट्स हैं इसके. तो थ्योरम ये है, let y be a closed subspace as usual. जैसे कि मैंने कहा closed होना जरूरी है. Closed subspace of a normal linear space x, normal linear space x, and y perp be the annihilator of y जो हमने अभी डिफाइन किया. ओके, देन 2 पार्ट्स करते हैं. a y star, यानी अगर मैं डबल लेता हूँ y का, is isometrically isomorphic x star by y perp. b x by y perp एक तरह की फिर से duality ही है, is isometrically isomorphic to y perp.
ठीक है, मतलब ये इंटरेस्टिंग है लेकिन हालांकि इजी टू प्रूव है एक्चुअली। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑफ कोर्स वाई पर्ब जो है इज इंडीड, जो हमने अभी किया था, क्लोज्ड सबस्पेस of x star. So of course then this is meaningful. X star by y perp is a normal linear space. इसमें तो कोई शक नहीं। और of course y star तो है ही, it is just y is a subspace, therefore it's itself a normal linear space. तो मैं इसको डबल ले सकता हूँ। Same here, चूंकि y है closed subspace, तो x by y is well defined, so it's a normal linear space. I can take its dual. It's isometrically isomorphic to this normal linear space. Now, what do I mean by isometrically isomorphic? It means that there would exist, so if I say x, yeah, m and n are isometrically isomorphic. Actually, थोड़ा सा इसमें है कुछ फर्क। जब मैं लेता हूँ नॉर्मल लीनियर स्पेसेस में ये मॉर्फिज्म्स, उसमें थोड़ा सा एक जगह सटलिटी है, लेकिन यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, इफ देयर एग्जिस्ट अ मैप फ्रॉम n to n that is a linear bijection that preserves the norm. यानी बाइजेक्शन है जो लिनियरिटी को भी प्रिजर्व करती है और नॉर्म को भी, तो वही हम यहाँ पे दिखाएंगे। देयर एग्जिस्ट दिस मैप बिटवीन दीज टू स्पेसेस। मैंने कहा सटलिटी ये है कि यू कैन थिंक ऑफ m एंड n, अगर वो नॉर्मल लीनियर स्पेस है, एज नॉर्मल स्पेसेस। You can also think of them as metric spaces. You can also think of them as topological spaces. So you could think of isomorphisms that preserve norm, that preserve metric, or that preserves the topology. Of course, norm, if the norm is preserved, metric is also preserved, topology is also preserved. But it's not necessary if topology is preserved, then the norm would be preserved or the metric would be preserved. So one way to तीनों आ जाएंगे, लेकिन मतलब there are three different ways of identifying two normal linear spaces. Okay, now let's go for the proof. Proof is rather easy. वैसे अगर तुम सोचोगे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर तुम y को मारने वालों को लाओगे तो y इस साइड से भी, मतलब जो y के बाहर है वो मारे जाएंगे एक तरह से, यानी y स्टार के बाहर। बट वो थोड़ा क्या बोलते हैं ना, नॉन मैथमेटिकल लैंग्वेज है। सर हाँ सर फिर सिमेट्रिकली आइसोमॉर्फिज्म में यही एक एडिशनल प्रॉपर्टी है कि ये नॉर्म को भी प्रिजर्व करता है। हाँ, जब मैं यहाँ कहूँ, मतलब ये है ना कॉन्टेक्स्ट होता है ना। कभी कभी मैं कहूँगा आइसोमॉर्फिज्म, अगर मैं वेक्टर स्पेसेस की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होगा, इट वुड बी अगर मैं कहूँ बाइजेक्टिव बाइजेक्शन दैट मॉर्फिज्म। प्रिजर्व्स ग्रुप स्ट्रक्चर, दैट प्रिजर्व्स वेक्टर स्पेस, मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो लीनियर स्ट्रक्चर है और नॉर्म है। और तो नॉर्म जब है। मैं यहाँ ये साइन लगाऊंगा आइसोमॉर्फिज्म की, तो उसका मतलब इट मस्ट बी अ बाइजेक्शन दैट प्रिजर्व्स linearity नॉर्म। well as norm। ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ यस सर। आइडेंटिफाई, ये हो ना एक तरह के, हम इसको इसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ रीलेबलिंग। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल लीनियर स्पेसेस में आइडेंटिफाई करने के तीन तरीके हो सकते हैं आपस में। We can identify their topologies, or we can identify their metrics, or we can identify their norms. But if we identify their norms, then मेट्रिक और जो टोपोलॉजी है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर टोपोलॉजी आइडेंटिफाई करने से ये मतलब नहीं है उसका नॉर्म आइडेंटिफाई हो, मतलब इट्स एक्चुअली आइडेंटिफाइंग देम एज सेम। वो जो सेमनेस है ये सर दैट, हम तो सर हम आइडेंटिफाइंग, लॉरिश प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो है ना, हाँ मतलब मैट्रिक बिल्कुल और टोपोलॉजी उसी में कंटेन करेंगे। बिल्कुल, हाँ नॉर्म में मेट्रिक भी कंटेन है, टोपोलॉजी, लेकिन वो यस सर रिवर्स में नहीं। टोपोलॉजी। ठीक है ना, यस मेट्रिक में सर। टोपोलॉजी कंटेन है लेकिन टोपोलॉजी में मेट्रिक कंटेन नहीं है ना, यस सर। ऐसा ही है। ओके, अब प्रूफ। अब डिफाइन, ऑब्वियसली हमें मैप डिफाइन करना है तो सीधे मैप ही डिफाइन करते हैं। डिफाइन f from this x star by y curve to
तो क्या बचा y स्टार। तो मैं ये डिफाइन करूंगा, तो इसके तो एलिमेंट्स होंगे कोसेट्स बाय f ऑफ क्या होना चाहिए x स्टार प्लस y परब। अब यहाँ पे क्या लूँ मैं, इसको मुझे इसके साथ मैप करना है, तो आई टेक x स्टार रेस्ट्रिक्टेड टू y। तो यू नो दैट अब क्योंकि इसके साथ it has to depend upon x star, how do I make the dependence? Now clearly x star जो है it is a linear map from x to k, so obviously it is also linear on the subspace y है ना to k। तो मैं कहूँगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मानता हूँ a map from y to k, so it is a linear, and so then x star restricted to y would be linear on y है ना, and it would be also continuous on y because it's continuous on the whole space, so it would belong to y star. So this is how I define the map. And now if x1 star अगर दो elements इसके बराबर हुए, तो I want to show that this is well defined and as well as दोनों हो जाएंगे, it would imply that इसको यहाँ लाएंगे वेक्टर स्पेस ऑपरेशन, तो तुम्हें पता ही है, it means x1 x2 star plus y perp is equal to 0, right? और चूंकि अगर should I write it like this? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ का 0 अलग है, मतलब एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था this minus this is equal to additive identity of my vector space, और इसकी additive identity बेसिकली है y पर, ठीक है। कोसेट्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होता है ना वही 0 प्लस y यानी y। तो एक्चुअली जब मैं यहाँ इसको वेक्टर स्पेस ऑपरेशंस को मैनिपुलेट करना हूँ, मैं 0 भी लिख सकता हूँ, बट वो शायद सही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 जब लिखते हैं तो उसका मतलब भी होता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द स्पेस इन विच आई एम लिविंग, एंड आई एम लिविंग इन x स्टार बाय y परब, और उसकी आइडेंटिटी है y परब। तो दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ एक्चुअली x1 perp minus x2 perp belongs to y। ये तुमने किया है, x plus y is equal to y if and only if x belongs to y। और यहाँ पे y perp है, doesn't matter, वो भी क्लोज सबस्पेस है, ये भी सबस्पेस है। ओके, अब अगर ऐसा है तो what does that mean? अगर ये annihilator of y में है, it is true if and only if fn star minus x2 star applied to x is equal to 0 for all x belonging to y, which would imply that x1 star minus x, ऐसे लिखते हैं because pointwise operations as usual, is equal to x2 star at x for all x belonging to y, which means when we apply to y they are the same maps, so it means x1 star restricted to y is the same as x2 star restricted to y। ये जो मैंने सारा किया इससे दो चीजें प्रूव हो गई, एक तो ये अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ इट शोज दैट इट्स वेल डिफाइंड, अगर मैं इस रिवर्स डायरेक्शन में जाता हूँ इट शोज दैट इट्स 1 to 1। So I have showed that therefore f is well defined and 1 1, ठीक है ना। Furthermore f is linear, क्या तुम ये खुद कर सकते हो f is linear? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डू इट योरसेल्फ, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना DIY। ओके, सो ये लीनियर है, 1 1 है, तो अब जरा देखते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का ये क्या करेगा। ओके, तो पहले दिखाते हैं ये ऑन टू है, तो मेरा मैप कहाँ से कहाँ जा रहा है, इट गोज फ्रॉम x स्टार टू y टू y स्टार। तो मुझे दिखाना है यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है सो इट हैज अ प्री इमेज, टू शो दैट f is on to, I hope ये खत्म हो जाए before हमारा टाइम। So let y star belong to y star। Again हमारा हान-बनाक थ्योरम कहाँ आएगा, then by हान-बनाक theorem I can extend it, there exists x star belonging to x star such that
x star when restricted to y is equal to y star. So that f of x, f capital F of x star plus y perp is equal to x star restricted to y. So for everything there exists this thing belonging to y star, so is equal to y star. So I have actually defined that it is on to. अब 1 मिनट रह गया है, मैं इसको बंद करता हूँ फिर तुम वापस ज्वाइन करो. तो हमने दिखाया 1 1 on to है, लीनियर है. अब देखेंगे ये मैट्रिक नॉर्म को भी प्रिजर्व करेगा एंड वी आर डन. सो लेट मी स्टॉप इट. मीटिंग को मैं स्टॉप एंड कर रहा हूँ, तुम जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि टाइम हो गया काफी.